I always wanted to raft the entire length of Indus from where it enters into Pakistan all the way down to the Arabian Sea. अच्छा जी, हम इस वक्त हमसीगोन में, और ये वो जगह जहाँ से हम अपना राफ्ट दरियाए सिंध में डालेंगे। और हमारा प्लान ये है कि दरिया के साथ साथ चलते हुए राफ्ट में कराची तक जाएंगे। We are at the confluence of River Indus and Shyok River. Power! जैसे हम लंच का वेट कर रहे थे तो हम देख रहे थे डस्ट स्टॉर्म भी आ रही थी हमारे अपोजिट में। तो उस टाइम पे हमें बहुत मुश्किल था कि हम आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि वो विंड्स जो है हमारे अगेंस्ट चल रही थी। उस डस्ट स्टॉर्म ने हमें बहुत रेत चुन सी थी हमारी आंखों में, नाक में और मुंह में, बोला भी नहीं जा रहा था। और फिर हम छुप के गाड़ियों के पीछे बैठे, कुछ लोग गाड़ियों के अंदर बैठ गए, कुछ गाड़ियों के बाहर उन्होंने अपने आप को डस्ट स्टॉर्म से बचाया। Just short of a store bridge, we were cruising down the river when we saw this family of Jalabans frantically waving at us. We thought they were just, saying hello, hi, but when we got close, we realized that they were saying not to go forward. So we came this way and found out that there's a huge rapid, which we just went and saw. It was 6+.
लेफ़्ट साइड से एक लोकल बंदे ने मुझे आवाज़ दी कि उस तरफ से जाओ, उस तरफ से जाओ। तो हमारे पास कोई 5-6 सेकेंड भी नहीं थे कि हम वहाँ से अवॉइड करें उस सेक्शन को। तो हमने कहा गो। Here we go! ये डैम सिर्फ ये वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं होता, डैम के पीछे पूरी लेक बनती है। और दामिर बादशाह डैम के केस में मेरे ख्याल में ये 100 किलोमीटर की लेक है पीछे। अताबाद लैंडस्लाइड, पूरा पहाड़ आके दरिया में गिरा। इस तरह का अगर कोई पहाड़ टूट के उस लेक में गिरता है तो उसकी जो एनर्जी है उस पहाड़ के टूटने की, वो पूरी की पूरी पानी में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसमें ये होता है कि वो एक वेव बनती है छोटे से डैम में, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वेव। और क्योंकि डैम जो है वो आगे तंग जगह के ऊपर बना होता है, तो वो जब वेव ऐसे करके तंग जगह पे आती है तो वो पूरी की पूरी एनर्जी वर्टिकली ऊपर लेके जाती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि डैम अपनी जगह पे खड़ा रहे, उसको कुछ ना हो, और जो पूरे का पूरा डैम का पानी है वो छलांग लगा के डैम से दूसरी तरफ जा गिरे, और फिर वो जो तबाही मचाएगा उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। Expedition Indus 2022 has entered into its second phase. We are in Jahangira, right next to River Kabul. We started from Jahangira and we saw there was a lot of pollution being poured into the river. There was sewage coming into it. There is a lot of pollution from the marble factories which are washing their marble crush. We saw children playing in that river. We saw women fetching water from there. We saw animals drinking it. So I believe, that also requires a case study to check whether this, how much this has impacted the health. Pakistani water establishment has been almost addicted since the mid-19th century and increasingly so since the mid-60s with the Indus Waters Treaty and the Indus Development Program of foreign funded, designed, consulted kinds of mega projects. And I don't think I'm being cynical, I think I'm being realistic that a lot of this drive for dams, unnecessary, expensive dams, is driven by those. We are in the old city of Kalabagh and it is beautiful. This place is called Loharawala Bazaar and it has old wooden houses, dilapidated houses, but people are still living in them. Has a very sort of local
community feel, you know, and I felt like I'm in the olden times. We've been on the boat for the past 5 hours. The progress is really slow because there are so many patches of shallow water that we have to get out of the boat, turn the engine off, push it towards the deep channel. So it's really frustrating because we have to cover a lot of distance towards Dera Ismail Khan. एक ख़ास बात इस दरिया की ये भी है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉल्फिन स्पीशी का भी घर है, जिसको कि इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं और मुकामी लोग उसको भुलन कहते हैं। तो ले दे के इसकी जो टोटल तादाद है इस दरिया में वो अभी 1400 से 1500 के करीब रह गई है, जो कि बहुत ही एक कम तादाद है किसी भी जानवर के सर्वाइवल के लिए। इसलिए इसको एक एंडेंजर्ड स्पीशी भी कहा जाता है। We just saw an Indus blind dolphin moments ago, a few kilometers down the Dera Ismail Khan Bakr Bridge. Great sign, I'm so happy about it. It just went like this. Just, you know, fleeting glimpse, but there is one Indus blind dolphin right here. So, for record, one we saw. I hope we spot more. This is Mr. Majid, who lives right by the river, and his house is next in line. The river is eroding this land. Soon his house will be gone and he'll have nowhere to go. Majid sahab, जी सर ये थोड़ा कार ते बस जान वाला है। जी हाँ बिल्कुल ढाना ले आगे ढाए गए ना जी हाँ पहले थे घर से जी हाँ तो सारे घर हैं उधर मस्जिद है पे सारे जा रहे थे घर हैं पे तो ये थोड़ा घर तो जब बह जाएगा तो फिर किधर जाओगे? बस फिर पीछे जरा एरिया जमीन है अपने कोने भी जगह बन के मुल्क घिनू जाए इतना पैसा ही कोने बस इडू ढाने तो बड़ा इडू वाल बने हैं उधर उस तरफ। जी हाँ तो कितनी जमीन है आपकी? अपनी जमीन थोड़ी है तकरीबन 2 कनाला है इतना ही है जितना बैठे हैं यही है जी हाँ ये तो दरिया जब इसको ले जाएगा तो बस पीछे बात अल्लाह के आस रहते हैं ओहो जी हाँ तो ये तो पहुंच जाएगा दरिया जी ये तक दरिया पहुंचा ये हम लोग बात पूजा काली ले पाए हैं अल्लाह के आसरे ते बैठे हैं। Very close to Tonsa Barrage, there is this fisherman community. These fishermen live on their boats, they eat on their boats, they have their weddings on their boats. I mean, that's their life. So let's take a look.
We just got shot at by the guy over there. We are in the firing range of these guys who are shooting at us. We are at Kotri Barrage, and lo and behold, there is no water. I don't know how we will raft all the way to the delta. That was our original plan. So think about it, from Kotri Barrage all the way to Karachi, there will be no river. So I guess this is the end of Expedition Indus 2022, because there is no more river further downstream. Let me show you the reality of the delta of mighty river Indus. We are on our way to Karachi, but I had to stop and show you what happens when the river doesn't flow. This vast expanse of land was once riverine forest and agricultural land which yielded great quantity of crops. But now, river Indus stops at Kotri Barrage. It doesn't flow here. So what happens is that the seawater is encroaching this land. The seawater in high tide comes all the way, goes all the way over there, and when it recedes, all this land becomes useless. Look at the desolation. There's nothing but just bushes flailing in the wind. Let me see what this water tastes like. Yep, it's brackish. Well, we are in the mangrove forests of KT Bandar. This is a beautiful walkway. The breeze is beautiful, and today we learnt a lot. But the most important thing we learnt over the period of 45 days that we have traveled on the Indus is that let the rivers flow, let the people flourish, let the civilizations thrive along the banks of Indus. Do not mess with nature, do not tie up rivers, and respect people's wishes. Nature will respect you. Otherwise, don't expect miracles to happen, because they won't.